कैसे हैं सभी आप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी के सॉल्यूशंस की। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सॉल्व किए सेक्शन ए के सॉल्यूशन डिटेल में, वो भी और कुछ ट्रिक्स एंड टिक्स के साथ में। तो लो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, second equation this one, और यहाँ पे हम बेस्ट मेथड एलिमिनेशन को यूज कर रहे हैं। 55 से फर्स्ट इक्वेशन को और 44 से सेकेंड इक्वेशन को, यानी कि 11 5 जा 11 4 जा, यानी कि 5 और 4 से मैं इस पूरी इक्वेशन 1 और 2 को रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। यस, एंड 4 into 40 is equal to 13 4 जा, yes, because same sign subtract, yes, 220y cancel out, minus 10x is equal to minus 2 and x is equal to 2 by 10, that is 1 by 5. Substitute or put this value in any of the two equations. Suppose I am substituting it in one equation, then what we will get? 30 into x plus 44 into y is equal to 10. So 44y, this one, is equal to 10 minus 6, that is 4. So y will be 4 by 44, that is 1 by 11. So finally what we will get? X is equal to 1 by 5 and y is equal to 1 by 11 is the final answer. Next question, number 22a part. Yes, in this question they are saying a 1.5 meter tall boy, suppose this is 1.5 meter tall boy AB, is walking away, दूर जा रहा है, from the base of the lamp post. Suppose this is the lamp post and its base is P, base से वो दूर जा रहा है, which is 12 meter in height and speed is 2.5 meter per second, and find the length of his shadow. His shadow will be, student, this QB. We need to find QB, length of his shadow, after 3 seconds. So time is given 3 seconds. So if we have speed and time, then we can find distance, which is speed into time. So we will get 7.5 meter. So this distance BP that will be covered by the boy will be 7.5 meter, and we need to find this distance QB, let it be x meter. Now I am using the concept of trigonometry by taking theta here, but you can use the concept of similar triangle as well, no problem at all. So tan theta in a small triangle, this will be perpendicular over base, and simultaneously the same theta we are having in the big triangle. तो बड़े triangle में क्या होगा? base, sorry, perpendicular upon base is x plus 7.5. Now we will use these two and we will find the value of x. तो 1.5 upon x, point हटा के नीचे 1 and 0, 12 over x plus 7.5. 3 5 ja, 3 4 ja. Now we will do it cross multiplication, and before we do it we can cancel 5 and 2 as well. Now we will do cross multiplication. 4 into 2 8 into x 8x.
is equal to x plus 7.5. So x will be 7.5 over 7, 7.5 over 7, और 7.5 अपॉन 7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 1.07 approx. So you will write approx. This will be the required shadow of the boy, which is QB or x meter. So x will be 1.07 meter. Coming to the next or part of the same question, number 22, B part, B part. So let us do now this B part. In a parallelogram, okay, I am making a parallelogram ABCD, okay, A, B, it is C and D, ABCD. Side AD is produced, okay, I am producing the side AD, okay, to a point E. Let this point be E and BE intersect. So I will join definitely BE. This BE is intersecting CD at F, and we need to prove that this ABE, triangle ABE. So ABE I am highlighting. Check. मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ. ABE is similar to CFB. CFB highlighting with the blue highlighter. Check. तो मुझे ये येलो और ये ब्लू कलर वाले दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है, क्या करना है? यस यस, सिमिलर प्रूफ करना है. तो देखिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसका ये एंगल और सेम पैरेललोग्राम का ये एंगल जो कि ब्लू वाले ट्राइंगल का एक एंगल बनेगा और ये येलो हाईलाइटेड ट्राइंगल का एक एंगल बनेगा. तो ये दोनों एंगल इक्वल है. वाई? क्यों इक्वल है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है. सो व्हाट आई विल राइट, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी. व्हाई दे आर इक्वल? ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal. And second thing, check it out, because parallelogram के opposite sides क्या होती है? parallel. तो देखो ये बन रहा है हमारे पास z, हमारे पास क्या बन रहा है? z बन रहा है. देखो ये रहा, और z में बनने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. उल्टा z बन रहा है. देखिए, तो व्हाट आई विल राइट, एंगल AEB is equal to angle FBC. Why they are equal? They are alternate interior angles. So what we can say, yes, that by AA similarity, these two triangles, that is ABE, is similar to CFB. ABE is similar to CFB. CFB. Hence proved. So let us coming to the next question, which is question number 23 from chapter coordinate geometry. Find the coordinates of the point C which lies on the line AB produced. So this is the line AB. This is the line AB. एंड ए बी प्रोड्यूस के ऊपर वो बोल रहा है, तो ये मैंने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, मैंने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया. कहाँ तक? सी तक. सच दैट ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी. यानी कि जो ये ए से लेकर के है और जो सी तक डिस्टेंस है, ये हाईलाइटेड डिस्टेंस, ये ए सी, ये बी सी का डबल है. बी सी का डबल है. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर ए सी बी सी का डबल है, तो देन व्हाट वी कैन से that B is the midpoint. Very simple.
B is the midpoint of AC, and if it is the midpoint, then we can use midpoint formula to find the coordinate, where the coordinate of A and B are -1, 7 and 4, -3. And we need to find the coordinate of the point. Let this be x2, y2. Because if it is x1, y1 and if it is x2, y2, then the midpoint will be x, y using the formula x1 plus x2 by 2 and y equals to y1 plus y2 by 2. तो देखिए x को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और देन x1 और x2 को भी मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ. तो व्हाट इज x? ऑब्वियसली मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट की x वैल्यू है 4, x1 प्लस x2 दैट वी नीड टू फाइंड x2 ओवर 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, -1 प्लस x2 is equal to 4 to the 8, x2 will be 9. And similarly here y, तो y को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू कलर से और y1 और y2 को हम कर देते हैं स्काई ब्लू कलर से. तो व्हाट इज y? -3, y1 7, y2 we need to find upon 2. Same method, cross multiply, and y2 will be 13. So x2 and y2, which are the x and y coordinate of the coordinate c, point c, sorry, so c will be x2 comma y2, and that is our final answer of c. Coming to the next question, number 24. They are asking the value of x. x की वैल्यू पूछिए. देखिए याद करिए, सेम क्वेश्चन वी हैव गिवन इन एनसीईआरटी बुक एज वेल, बट वहां पे एक क्वेश्चन है जिसमें 7 दे रखा है. याद करो अगर किसी को याद आ रहा हो तो इन्होंने क्या किया, उस क्वेश्चन को 7 की जगह x लिख दिया और पूछ लिया x की वैल्यू क्या है. तो ठीक है, ऑलरेडी ये इक्वेशन दे रखी है, हमें कोई प्रूव नहीं करना है, ध्यान रखिएगा. तो मैं LHS RHS नहीं लिख सकता यहाँ पे. एक्सपेंडिंग दी ब्रैकेट यूजिंग दी फॉर्मूला a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, and second bracket a square plus b square plus 2ab. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने क्या बोला, RHS भी लिख सकते हैं क्योंकि मुझे प्रूव नहीं करना है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग RHS एज वेल, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, नाउ चेक दिस sin square plus cos square a becomes obviously 1, so we can say 1. And check it out, cosec is 1 upon sine and this sec is 1 upon cos. So I am writing this pink highlighted part first. So 2 sin a, cosec can be written as 1 over sine. Similarly, this second pink one, 2 cos a, sec can be written as 1 over cos. And I think so understood, पिंक से पिंक समझ में आ गया होगा, और स्काई ब्लू से स्काई ब्लू. नाउ कमिंग टू द येलो पार्ट, लेफ्ट साइड में जो बचे हुए हैं, cosec स्क्वायर एज इट इज, एंड देन sec स्क्वायर वो भी एज इट इज इक्वल टू x प्लस. नाउ आई एम यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर. सो tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec square x minus 1. So check it out, the identity what I used here, tan square is equal to sec square x minus 1 and cot square is equal to cosec square x minus 1. तो दो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज कर ली है. नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा. नाउ साइन टू साइन कैंसिल आउट, कॉस टू कॉस कैंसिल आउट,
and cosec square to cosec square cancel out, sec square to sec square cancel out. So 1, 2 into 1, 2, 2 into 1, 2 is equal to x minus 1 minus 1 minus 2. So we are getting x is equal to 2 plus 2 plus 1 5, और ये 2 minus 2 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जाएगा तो 5 plus 2 7. So finally we can say x is equal to 7 only. That is the final answer for 24th question and A part. Coming to the next part, 24th का B वाला पार्ट करना है सॉल्व. देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 3 sin 30 की वैल्यू टेबल आपने टेबल से देख के, टेबल जब भी हम एग्जाम देंगे तो टेबल हम सजेशन करते हैं बच्चे को, एडवाइस करते हैं कि वो लास्ट में टेबल बना दो. sin 30 1/2, अगेन sin 30 1/2 एंड होल क्यूब. डिनोमिनेटर में एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं हम, क्योंकि 50 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है तो हम 2 कॉमन लेंगे, और साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 ब्रैकेट में बचेगा. एंड यू नो इफ आई रीड 50 डिग्री एज थीटा, देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने बड़े दिमाग से बनाया, उसको पता है कि 50 डिग्री की वैल्यू बच्चे को पता नहीं है, और ये ऐसे ही सॉल्व करना है उसको, और वैल्यू पुट करेंगे भी नहीं हम, क्योंकि वो डेसिमल्स में होगी, दिक्कत होती है बहुत. और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 आइडेंटिटी से. तो डिनोमिनेटर वी विल लेफ्ट ओनली विद दी 2 into 1. This whole highlighted part becomes 1 by the identity. तो ये 1 बन जाएगा. न्यूमरेटर 3/2, 4, 1 cube 1, 2 cube 8, 4 2 जा 8, and we are getting in the numerator 3/2 minus 1/2, and in the denominator only 2 1 जा 2. अब हम इस रेड हाईलाइटेड 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा. तो 2 एलसीएम चेक, and 3 minus 1 and upon में denominator 2. 3 minus 1 2, 2 upon 2 1. So 1 we will be having 1 in the numerator, 1 in the numerator. चेक, ये 1 आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पर, and denominator 2. So finally we are getting 1/2 as answer of the given question. Coming to the next question, number 25, last question of section B. Two friends, Anil and Ashraf, were born in December month in the year 2010. And you know, December में total होते हैं number of days 31. Now first part, because we need to find probability, 2 marks questions, so 1 marks each for first and second part. So 31 in the denominator, they share same date of birth. अब दिसंबर के मंथ में अगर अनिल और अशरफ दोनों के ही बर्थडे आते हैं तो केवल एक दिन ही ऐसा होगा जब वो क्या होंगे, जब वो सेम डेट पर बर्थडे मना रहे हों, सेम डेट पर. आई थिंक सो अंडरस्टूड. तो आंसर इज 1/31. एंड सेकेंड पार्ट, दे हैव द डिफरेंट डेट्स. तो डिफरेंट डेट्स कितनी बचेगी, 31 minus 1 30 upon 31. तो ये था सेक्शन बी के सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. अगर आपको पसंद आए हो तो जरूर लाइक और शेयर कर सकते हैं. तो अब इसके बाद ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और फिर सेक्शन सी के सॉल्यूशन के लिए बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.